Hello everyone, welcome to my channel. So today we discuss our types of a module in a Node.js. So by using this kind of a module, we can make an enhanced Node.js application. Also make a more functional and various tasks in a JavaScript development, particularly in a server-side programming. So let's start. So module types. So Node.js included two types of a module. The first one is a core module and the second one is a local module. So in a Node.js we are using two modules. The first one is a core module and second one is a local module. Now firstly we discuss about a core module. So what is a core module? So core module refer to the module that are built into the Node.js runtime environment. So as we know, JavaScript module is a library files form. So when you install a Node.js on your system, so these modules are automatically available for use in your Node.js application. So the core module in a Node.js are the module that come bundles with the Node.js runtime environment. Now the next point, these modules provide essential functionality for various tasks such as file system operation, networking, event handling, and many more. So by using Node.js module, we can perform operations like file handling in a Node.js. So talking about file handling, Node.js provide a FS module. FS means a file system for interact with the file system. With this module, we can perform operations such as reading from file and writing to a file, also creating and deleting a file and directories also. Some other kind of operation like modify the file permission and many more operations. Now also talking about a network operation. So for that purpose, Node.js include a core module like HTTP and HTTPS for building a web server and making HTTP or HTTPS requests. So these modules allow you to create a HTTP server to handle incoming HTTP request and make a HTTP request to the external server and handle HTTP connection securely. Now, event handling operation. So the Node.js include event module, which provide a event-driven architecture that allow you to emit and listen for the event within your application. With this module, you can create a custom event, register event listener, or handle events asynchronously. So these are the kinds of operation we can perform by using this core module. Now the next point, core module can be used without a need for the installing additional package via npm. npm means Node Package Manager. So the core module in a Node.js are bundled with a Node.js runtime environment. Means they are available out of the box when you install a Node.js in your system. Unlike third-party module, which need to be installed separately using a npm command. But in the core module, we do not require any additional installation step. So this is the introduction part of Node.js. Now here we have seen a list of core modules which we use in Node.js. So these are modules like HTTP, FS, path, process, OS, and URL. Now talking about HTTP module, so these module which we use to create a HTTP server in a Node.js. Next one is a FS means file system. So these module we use to handle file system. Next one is a path. So this module which we use to include method to deal with the file path. Next core module is a process.
So these modules provide information and control about a current Node.js process. Now OS provide information about operating system, and last one is a URL. So these module provide a utility for URL resolution and parsing. So these are the list of core module which we use in Node.js. Now the next we're talking about how to load core.js module in a Node.js. So how to loading a core module in a Node.js application. So in order to use a Node.js core or npm module, you first need to import it using a required function as shown below. Means this is a syntax which we use to how to import module. So this is a syntax we have observed that. So here we are creating a one variable module, and here we are using a require method. Now inside of this require method, here we mention a module name. So whenever we using a core module functions, objects, or some other features, so firstly we have to require to import these module. Now the next point. So the require function will return an object, function, property, or any other JavaScript type depend on what the specified module returns. So require function or method is a versatile function in a Node.js that dynamically load a module and return whatever the value that specify module export, be it objects, function, property, or other JavaScript type. So let's see example on a core module. So let's start with the core module example. So इस एग्जांपल में हम कोर मॉड्यूल को यूज़ करके हम एक वेब सर्वर क्रिएट करेंगे. So firstly we open a Visual Studio Code, and here I'm using one folder Node.js prac. Now inside of this folder I am creating one file जिसको मैं नाम दूंगा core demo core demo.js. Okay, so first what we will do, हम यहाँ पे core module को import करेंगे by using a required method. So यहाँ पे हम एक variable create कर रहे हैं constant http, and यहाँ पे use करेंगे require method. Now inside of this require method, here I mention our core module name https. Now the next हम एक पोर्ट यूज़ करने वाले हमारे सिस्टम का, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल बना रहे हैं पोर्ट. So port actually is nothing but the communication point between a user to server. तो सर्वर को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़र को सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक पोर्ट नंबर लगता है जिसके थ्रू वो दोनों कम्युनिकेट करते हैं. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारी सिस्टम को ही वेब सर्वर में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम हमारी सिस्टम का 4000 जो पोर्ट नंबर है उसको यूटिलाइज करेंगे, जिसके थ्रू क्या होगी कि यूज़र की जो भी HTTP रिक्वेस्ट होगी वो इस पोर्ट नंबर के थ्रू पास होगी वेब सर्वर के पास. तो यहाँ पे हमने पोर्ट नंबर यहाँ पे क्रिएट किया. नाउ नेक्स्ट अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक और एक वेरिएबल क्रिएट करने वाले कांस्टेंट सर्वर. ओके, और इस सर्वर को हम असाइन करेंगे HTTP के वेरिएबल को यूज करके हम यहाँ पे क्या करने वाले, क्रिएट सर्वर बनाने वाले. ठीक है, तो यहाँ पे हमने सर्वर बना दिया. नाउ इनसाइड ऑफ दिस क्रिएट सर्वर मेथड, हियर आई मेंशन वन arrow function. So in this arrow function, here we mention two objects, request and
रिस्पॉन्स। सो एज वी नो, जब भी हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे रिक्वेस्ट दो फॉर्म में पास होती है, मतलब जो भी वर्किंग होता है क्लाइंट सर्वर का वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हमने एक सो यहाँ पे हमने क्रिएट सर्वर मेथड यूज़ करके, जिसके अंदर हमने एक एरो फंक्शन यूज़ किया और उस एरो फंक्शन में हमने दो ऑब्जेक्ट्स पास किए, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। Now first what we will do here, firstly we have to set response header। तो हम यहाँ पे पहले रिस्पॉन्स हेडर को सेट करेंगे, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे हम रिस्पॉन्स हेडर को सेलेक्ट करेंगे। ओके, और रिस्पॉन्स हेडर ये क्या करता है कि ये जो हमारी जो भी हमारा रिस्पॉन्स होता है वो रिस्पॉन्स जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक रहता है हेडर पार्ट और दूसरा रहता है बॉडी पार्ट। तो यहाँ पे हम पहले हेडर पार्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, जहाँ पे हम बताएंगे पहला जो पार्ट रहता है वो रहता है स्टेटस ऑफ द रिक्वेस्ट एंड देन हम यहाँ पे पास करेंगे कंटेंट टाइप। तो कंटेंट टाइप मीन्स व्हाट? इट सिंपली मीन्स जो भी मैं रिस्पॉन्स पास करूंगा वो रिस्पॉन्स का फॉर्मेट हम यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरा रिस्पॉन्स जो होगा वो क्या होगा, टेक्स्ट के फॉर्म में या फिर मेरा HTML के फॉर्म में क्या होगा, रिस्पॉन्स पास होगा। ओके, सो यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स मीन्स हमने रिस्पॉन्स का हेडर पास सेट किया। ना अभी हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स बॉडी में, मतलब मुझे रिस्पॉन्स में क्या मैसेज पास करना है वो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे हमने कंटेंट टाइप में ऑलरेडी मेंशन किया कि कंटेंट टाइप इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट /HTML। तो यहाँ पे जो मेरा रिस्पॉन्स हेडर है तो वो हेडर रिस्पॉन्स बॉडी जो है जो क्या होगी कि जो भी रिस्पॉन्स होगा वो HTML के फॉर्म में होगा या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में होगा। सो हियर आई मेंशन HTML tag and hello everyone। सो यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स को डिज़ाइन किया बेस ऑन अ कंटेंट टाइप। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट भी यूज़ किया है और HTML भी यूज़ किया है। तो जब भी मेरा सर्वर कनेक्ट होगा सक्सेसफुली तो वो क्या करेगा, एज अ रिस्पॉन्स फॉर्म ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है उसको कन्वर्ट करेगा HTML फॉर्म में। नाउ अभी यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स का हेडर भी सेट कर लिया और रिस्पॉन्स का बॉडी पार्ट भी सेट किया। अभी हमें क्या करना है, सर्वर को कॉल करना है। तो सर्वर को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे बाय यूजिंग अ सर्वर हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करते हैं जिसको हम कहते हैं लिसन। तो ये लिसन क्या करता है, तो लिसन का काम रहता है पोर्ट को लिसन करना। सो यहाँ पे हमने जो पोर्ट मेंशन किया है उसको यहाँ पे पास करेंगे। देन यहाँ पे एक एरो फंक्शन कॉल करके हमारा रिस्पॉन्स सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ console.log and here I am passing server run on local host colon, and here I'm passing $sign and port. Okay, wait, सॉरी यहाँ पे मुझे www नहीं, यहाँ पे लिखना था HTTP। फाइन।
So this is the way we create a web server by using a HTTPS. now अभी इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे. तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा प्रोसेस सेम रहेगा. जस्ट क्लिक ऑन दिस फाइल एंड हेयर आई एम क्लिक ऑन ओपन इन अ इंटीग्रेटेड टर्मिनल. तो यहाँ पे हमारा टर्मिनल ओपन हो गया. सो वेट करेंगे. यस. सो दिस टर्मिनल इज लुक लाइक अ कमांड प्रॉम्प्ट. सो अभी इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे. तो इसके लिए हम कमांड पास करेंगे node core demo.js. now enter. okay, now the server is running mode. so अभी हम यहाँ पे okay, server is running mode. let's check कि ये हमारी फाइल के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा है क्या. सो यहाँ पे हम लिखते हैं लोकल होस्ट एंड 4000. now enter. so see, this is our output. तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम, यहाँ पे हमने वेब सर्वर को क्रिएट किया है एंड बेस्ड ऑन दिस वेब सर्वर हमारा आउटपुट इस लिसनर के ऊपर से कॉल होके हमें ये आउटपुट जनरेट कर. Now let's talk about a local module. So before starting with a local module, firstly we discuss about one scenario. So based on that scenario, we will get an idea why we are using a local module in a Node.js. So consider a scenario like where we build a web application using a Node.js and we need to implement authentication functionality. So we have two options for that purpose by using a core module or creating a local module. Now firstly we're talking about using a core module. The scenario like you need to be a hash user password for a secure storage in a database. So for that purpose we providing solution like we decide to use one built-in module which we called as a crypto. So these crypto module which provide a cryptographical functionality. So as per scenario we have observed that we want to be a hash code for a password to securely store in your database. So for that purpose we use a crypto module in a Node.js to provide a cryptography functionality. Now the next we're talking about a second option, create a local module. So in this module, the scenario like you need to implement user authentication and authorization logic in your web application. So by using a local module, we provide a solution like we will decide to create a local module name just like authentication util and to encapsulate the authentication related functionality. So as per scenario, we find out a core module used to generate a hash password, but the local module we use for the authentication and authorization logic. So core module is not provided such authentication and authorization logic. For that purpose, we use a local module. So in a Node.js application, we use a local module in a various situation. So what is a local module? So Node.js comes with a different predefined modules, example like HTTP, FS, path or etc. that we use and scale our project. So by using this core module, we develop our Node.js application and to provide a scalability in our project. Now the next point, local module are the module to create a locally in your Node.js application. Now next point, these modules include different functionality of your application in a separate file and folder. So by using a local module, we can define different functionality in a separate JavaScript file, or we can say a separate folder also. Now next point, it is also called as a user defined module. So in a
talking about local module we also called as a user defined module. Now let's see the example on a local module. So let's see the next example on a local module. So as we know, the local module which we use for the different functionality purpose, and these different functionality we will separatize by a separate file. सो इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, मैथमेटिकल फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करें, जहाँ पे हमें हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे. तो वो जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का फंक्शनलिटी है उसके लिए हम एक फाइल क्रिएट करेंगे. सो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ math.js. तो इस फाइल में हम दो फंक्शन यूज़ करने वाले हैं. एक फंक्शन एडिशन के लिए जिसमें हम पास कर रहे हैं दो पैरामीटर a and b. Now this function return me a plus b. ओके, तो यहाँ पे हमने एक ऐड फंक्शन क्रिएट किया जो हमें क्या करेगा, एडिशन परफॉर्म करके उसकी वैल्यू रिटर्न परफॉर्म करेगा. नाउ सेम एज इट फॉर सब्सट्रैक्शन पर्पस. तो यहाँ पे हम एक और फंक्शन बना रहे हैं सब, एंड इस रिटर्न में हम पास करेंगे यस. नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स. मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि हम एक्सपोर्ट ही लिखते हैं, बट यहाँ पे हमें पास करना एक्सपोर्ट्स. सो यहाँ पे हम पास करेंगे the object, or we can say functions, which we have to export in a main file, means our javascript file. So यहाँ पे मैं दो फंक्शन को एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, ऐड और सब. ओके ना, अभी हम यहाँ पे फंक्शनलिटी यहाँ पे क्रिएट की है, बट अभी मुझे उसको Node.js की एप्लीकेशन में एग्जीक्यूट करना है. तो इसके लिए मैं एक यहाँ पे और एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ लोकल डेमो डॉट JS. नाउ अभी हमने फंक्शनलिटी maths.js से यहाँ पे सेट की है. जस्ट अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे उस फंक्शनलिटी को यूज़ करना है. तो उस फाइल को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा. तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, कांस्टेंट लोकल. ओके सॉरी, कांस्टेंट और वेरिएबल भी लिख सकता हूँ, डजंट मैटर. एंड हियर आई एम यूजिंग अ require method to import module, local module. ओके, सो यहाँ पे जब भी हम लोकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे तो जस्ट आपको यहाँ पे चेंजेस करना है डॉट डैश, और यहाँ पे हमारा फाइल नेम आ जाएगा जो हमने maths.js में सेव किया. ओके, अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जस्ट सिंपली यूजिंग अ कंसोल, जो फंक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ पे कॉल करूँगा. तो यहाँ पे मैं एडिशन करके ओके, देन लोकल डॉट यहाँ पे देखिए ऐड, और यहाँ पे मैं पास करूँगा जो वैल्यू सॉरी आर्गुमेंट वैल्यू. ओके, यहाँ पे सो same case for subtraction. ओके, सो यहाँ पे हमारा लोकल डेमो फाइल इज़ रेडी. नाउ अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे. तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा कमांड रहेगा node, देन फाइल नेम लोकल डेमो डॉट JS. Now enter. So see, this is our, oh sorry, 1 minute. यहाँ पे
पे मुझे सब लिखना था। फाइन, अगेन मैं इसको क्लियर करता हूँ एंड रन कर। सो दिस इज आवर आउटपुट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी हमें फंक्शनैलिटी यूज़ करनी थी उसकी हमने एक सेपरेट फाइल बनाई। तो यहाँ पे मुझे एडिशन या सब्सट्रैक्शन दिखाना था, उसका मैंने एक सेपरेट फाइल बनाया maths.js, एंड उस maths.js फाइल को हमने यहाँ पे क्या किया, local.js में इंपोर्ट किया, और थ्रू दैट इंपोर्टिंग फाइल यहाँ पे हमने लोकल वेरिएबल कॉल करके जो ऑब्जेक्ट्स मुझे क्या करने हैं और वी कैन से जो भी फंक्शनलिटी मुझे यूज़ करनी है तो वो लोकल डॉट ऑब्जेक्ट से मैंने उस फंक्शनलिटी को कॉल किया और यहाँ पे पैरामीटर पास करके वैल्यू एक्सेस की। So this is the output of a program. So here in this session we discuss kinds of or we can say type of